Importance of phonemic codes, why this is important and why we focus and we try to focus on phonemic code in a literacy skills classroom, and while teaching literacy skills, why we are talking about that. We are going to talk about the importance of a phonemic code. Students always need to learn it. Why? Because it serves like a foundation when we have to teach reading or we have to teach writing. Phonemic code is always the basis, because with the help of phonemic code, we try to relate a relationship between letter and the sound. We try to learn about that relationship, we try to focus that relationship that helps us in reading as well as in writing. It serves like a building block, it serves like a foundation. It is simply a sub-skill. As I have talked about these sub-skills also. I have many times mentioned that when we talk about literacy skills, we normally mention speaking, listening, reading and writing. But if we try to analyze these 4 skills, we come to know that these are the combinations of different sub-skills. आप किसी भी इनमें से एक चीज़ को उठा के देखें, writing को देख लें, reading को देख लें, how you will be able to read if you don't know about the word, how you will be able to read if you don't know about the spellings, how you will be able to write if you don't know about the spellings, how you will be able to combine the different letters and if you don't know about the sounds, how you will be able to pronounce if you are not familiar with the sounds. So अब ये सारे के सारे सब skills जो हैं ये associated हैं in literacy skills के साथ. इनमें से that's why we are saying कि ये building blocks हैं. आप spellings को, words को, साउंड्स को हटा दें तो आप ये सारे ब्लॉक्स अगर आप हटा देते हैं तो व्हाट आर यू डूइंग, इन फैक्ट यू आर ओमिटिंग द फाउंडेशंस. अब ये फाउंडेशन जब हट गई तो ऊपर जो रीडिंग की बिल्डिंग है या राइटिंग की बिल्डिंग है, यू वोंट बी एबल टू कंस्ट्रक्ट दैट बिल्डिंग जब तक कि आपके पास ये फाउंडेशंस नहीं हैं. तो फोनेमिक कोड जो है इट सर्व्स लाइक ए फाउंडेशन, इट सर्व्स लाइक ए वेरी इंपॉर्टेंट बिल्डिंग ब्लॉक जिसको बीच में से हटा दिया जाए तो आपकी बिल्डिंग बन नहीं पाएगी. Look at this particular, you see, अब टेबल है फॉर इंस्टेंस, तो उसने कंबाइन किया है उन्होंने ट, अ, ब, ल. ओके, these there are 5 letters in the word और in fact 4 sounds. और जब कोई पढ़ेगा उसको beginner, कोई learner, तो he or she will be trying to combine these sounds. अब देखिए क्या कर रहा है, he or she is trying to get the hold of that phonemic code. अब ये ट, अ, ब, ल, ये क्या हुआ है, इनफैक्ट एक रिलेशनशिप उसने फोकस किया है ना लेटर में और साउंड में. अब वो ब साउंड को पहले नहीं वो लाया, क्यों नहीं लाया, बिकॉज उसको नज़र आया है कि टी लेटर पहले है और टी के साथ साउंड क्या एसोसिएटेड है, ट. तो ये जो एक रिलेशनशिप है, आप देखिए किस तरह से ये जो फोनेमिक कोड ने उसको हेल्प किया है रीडिंग में. अगर ये फोनेमिक कोड और ये जो रिलेशनशिप है वो ओमिट करता है तो ही द चाइल्ड विल नॉट बी एबल टू रीड दिस वर्ड, क्योंकि उसके पास ये एसोसिएशन नहीं है कि लेटर के साथ साउंड क्या आती है. किसी भी इनमें से साउंड को वो आप हटा दें जो उसको नहीं पता है, लेटर के साथ फेमिलियर वो है लेकिन अगर साउंड के साथ फेमिलियर नहीं है तो वो क्या है, उसके पास फिर क्या, कौन सा नॉलेज नहीं है, फोनेमिक कोड का नॉलेज नहीं है. और उसके बाद वो इस वर्ड को पढ़ तो नहीं पाएगा ना, क्योंकि उसको नहीं पता है कि साउंड कौन सी, मैंने बी लेटर के साथ कौन सी साउंड एसोसिएट करनी है और एल के साथ कौन सी करनी है. तो ये जो एक एसोसिएशन वो बना रहा है और वर्ड को पढ़ रहा है, दिस इज़ द रीज़न दैट वी से दैट फोनेमिक कोड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और ये एक बिल्डिंग ब्लॉक है. और फिर आप एक और बात भी हमने की थी,
کہ الفابیٹس کے ساتھ ہمیں ساؤنڈ ساتھ ساتھ ہمیں اس کو انٹروڈیوس کرنی پڑتی ہیں. وہ اسی لیے کرنی پڑتی ہیں سو دیٹ جب چائلڈ is trying to read very initial and very simple words تو اس کے پاس یہ ریلیشن شپ کی اسیسمنٹ نالج ہو اور وہ اسیس کر سکے کہ یہ اگر لیٹر ہے تو ساؤنڈ کون سی ہے. اب اگر ان میں سے کسی کو بھی ساؤنڈ کی آپ اس کو ان کو نہیں دیتے ہیں انفارمیشن تو آپ دیکھیں بالکل بیسک جو ان کے ارلی آپ کی نرسری کی یا اس میں وہ جو ورڈز ہیں سن ہے یا ٹیبل ہے یا بوائے ہے یا گرل ہے جو بالکل ارلی ورڈز ہیں بچہ وہ بھی پڑھنے کے قابل نہیں ہوگا کیونکہ اس کے پاس لیٹر کی تو انفارمیشن ہوگی بٹ ساؤنڈ کی انفارمیشن نہیں ہوگی. اینڈ فونیمک کوڈ is not only important for these skills لیکن آپ کا throughout the phonological جو process ہے if you remember I showed you a model in the early lectures and the early topics and I will try to bring it once again in some other lecture also. ہم نے ایک ماڈل دیکھا تھا لینگویج کا which started with phonology, then it went to morphology, then it went to syntax and then to semantics. تو یہ جو process which started with phonology, it completed at the level of semantics because language کا سارا process ہی تب complete ہوتا ہے. Whatever I am saying, you are understanding and whatever you are saying, I am understanding. اگر اس میں سے ایک جگہ بھی میں جو بات کر رہی ہوں وہ آپ نہیں سمجھ پا رہے یا آپ کی بات مجھے سمجھ نہیں آ رہی تو کیا ہوگا کمیونیکیشن ول گیٹ ڈسٹرپٹیڈ. اور لینگویج کا جو بیسک پرپس ہے وہ کمیونیکیشن ہے. تو فونولوجیکل پروسیس آپ کا سارا کمپلیٹ ہونا ہے سیمینٹک لیول پہ جا کے جو بات وہاں شروع ہوئی تھی وہاں جا کے ختم ہونی ہے. ساؤنڈ سے شروع ہوئی تھی اس نے ورڈز بنائے تھے ورڈز نے آپ کی بات بنا دی تھی اکٹھی کر کے سینٹینسز میں اور ہم نے سینٹینسز کیوں بولے تھے کیونکہ میں کمیونیکیٹ کرنا چاہ رہی ہوں آپ کے ساتھ. تو یہ فونیمک کوڈ جو ہے یہ صرف اس ورڈ کی ریڈنگ میں نہیں بلکہ ساری بات کو کمپلیٹ کرنے میں بھی وہ ہیلپ کرتا ہے. اٹ سروز لائک اے building blocks not only for reading and for writing, rather for the whole communication and for the whole linguistic process.